Thank you very much, participants. Our trainer has just joined us for this career counseling webinar on Python programming, data science, and machine learning. And we're going to start in a while. Over to you, sir. Okay. So सबसे पहले हम बात करते हैं what is machine learning. So before we jump into neural networks, TensorFlow, Keras API, it's a good idea understanding a few fundamental ideas regarding machine learning. In this section, we'll cover some important theory and concepts surrounding machine learning. So basically, machine learning होती क्या है? तो इसमें हम देखेंगे what is machine learning, what is deep learning, difference between supervised and unsupervised learning, supervised learning process, evaluating performance, overfitting, underfitting of systems. Machine learning is a method of data analysis that automates the analytical model building using algorithms that iteratively learn from data. The machine learning allows computers to find hidden insights without being explicitly programmed. Where to look. इसमें कुछ आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसके पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स. सो बेसिक पोर्टफोलियो भी कह सकते हैं आप, और प्रोजेक्ट्स ऐसे प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा यूज होते हैं मशीन लर्निंग के लिए. तो उसमें आपके पास फ्रॉड डिटेक्शन होती है, वेब सर्च रिजल्ट्स होते हैं, रियल टाइम एड्स ऑन वेब पेजेस, क्रेडिट स्कोरिंग, प्रेडिक्शन ऑफ इक्विपमेंट फेलियर्स, न्यू प्राइस मॉडल्स, नेटवर्क इंस्ट्रक्शन, recommendation engines, customer segmentation, text sentiment analysis, customer run, और उसके अलावा pattern and image recognition, email spam filtering. Yeah, neural network are way of model biological neuron system. Mathematically, these networks can be used to solve tasks that many other types of algorithms cannot. Example, image classification. Deep learning simply refers to neural networks with more than one hidden layer. There are different types of machine learning we will focus on during the next sections of the course: supervised learning and supervised learning. Machine learning, automated analytical models. Neural networks are a type of machine learning architecture modeled after biological neurons. Deep learning, a neural network with more than one hidden layer. Let's begin learning about the one of the most supervised common machine learning tasks, supervised learning. So supervised learning के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो सुना तो सबने होगा, जो भी डेटा साइंस से जिसका connection है, supervised learning के बारे में सुना होगा. Supervised learning algorithms are trained using labeled examples such as input where the desired output is known. मतलब हमें पता है कि उसका आउटपुट क्या आना है, तो ये इसको हम supervised learning कह सकते हैं. ठीक है. For example, a segment of text could have a category label such as spam versus legitimate, positive versus negative. Movie. सही. The network receives a set of inputs along with the corresponding correct outputs, and the algorithm learns by comparing the actual output with correct outputs to find errors. It then modifies the model accordingly. Supervised learning is commonly used in applications where historical data predict like future events, जिसमें आपके पास फिर जो है क्या कहते हैं, ये एक चार्ट है जिसमें आपके पास डेटा एक्विजिशन है, डेटा क्लीनिंग है, देन टेस्ट डेटा है, मॉडल टेस्टिंग. और जब टेस्टिंग होती है ना, तो मॉडल की ट्रेनिंग और बिल्डिंग होती है. मॉडल क्या होता है? बेसिकली मॉडल आपका डेटाबेस होता है जहाँ पे आपका डेटा स्टोर होता है. ठीक है. तो उस मॉडल की टेस्टिंग होती है और देन उस मॉडल को आप डिप्लॉय करते हैं. सबसे पहले गेट डेटा कस्टमर सेंसिटिविटी होती है. सबसे पहले आपको डेटा को एक्विजिशन करनी पड़ती है, डेटा की एक्विजिशन करनी पड़ती है. उसके बाद क्लीन फॉर्मेट योर डेटा, क्लीन एंड फॉर्मेट योर डेटा यूजिंग पैंडास. ठीक है. देन ट्रेनिंग करते हैं डेटा की और टेस्ट करते हैं. उसके बाद जो है मॉडल की ट्रेनिंग और बिल्डिंग होती है. देन मॉडल की टेस्टिंग होती है. देन मॉडल के जो पैरामीटर्स है उन्हें एडजस्ट किया जाता है इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम. देन उस मॉडल की डिप्लॉयमेंट की जाती है. ठीक है. देन आपके पास व्हाट वी जस्ट शोड अ सिंप्लीफाइड अप्रोच टुवर्ड्स सुपरवाइज्ड लर्निंग. इट कंटेन्स एन इशू. It is fair to use our single set of data to evaluate our model's performance. After all, we were given the chance to update the model parameters again and again. To fix the issue, this issue, data is often split into three sets: training data, validation of data, और test data. ठीक है. ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनमें से डिवाइड किया जाता है ताकि आप इस पर काम कर सकें. देन जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली इसका आप मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं. देन जब इसको वैलिडेट करना होता है तो यूज डिटरमाइन व्हाट मॉडल हैव पैरामीटर्स टू एडजस्ट टेस्ट डेटा. ठीक है. और उसके बाद जो है इसमें आप जो है क्या कहते हैं, इस डेटा को टेस्ट भी कर सकते हैं. सही है.
This means after we see the results on the final test set, we don't get to go back and adjust any model parameters. This final measures is what we label the true performance of the model to be. ठीक है, आगे चलते हैं इसमें. In this course, in general, we simplify our data using simple train test split. Simple train test split, leaving the option students to go back and adjust the. अगर आपके पैरामीटर कोई मसला तो आप एडजस्ट जरूर करें, वरना अभी तो मसला नहीं होगा, बट एट द टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट जब आप उसे डिप्लॉय करेंगे, जब एंड यूजर के पास वो चीज जाएगी, देन वो मसला. After going through the course, you will be able to perform and other split to get these data sets if you desire. Overfitting and underfitting are the key steps हमारे पास. Now that we understand the full process of supervised learning, let's touch upon the important topics overfitting and underfitting. Overfitting क्या होती है? The model fits too much and to the noise from the data. This often results in low error on training sets, but high error on test validation sets. ठीक है, तो देखें गुड मॉडल है, सही है, बट अगर इसकी ओवरफिटिंग हो जाती है तो इस तरह से होता है. ठीक है, नॉर्मल मॉडल में इस तरह से डेटा पास होता है, जब ओवरफिटिंग होती है तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है उसमें बग आ सकते हैं. ये देन स्मार्ट ओवरफिटिंग है. अब बात करते हैं अंडरफिटिंग. So underfitting models आपके पास जो होते हैं, basically model does not capture the underlying trend of the data, that does not fit the data well enough, low variance but high bias. Underfitting is often a result of excessively simple model. Okay? जैसे कि डेटा है तो ये अंडरफिट होता है, तो ये बहुत ज़्यादा ही बूस्ट मार देता है. This data was easily visualized, but how can we see the underfitting and overfitting when dealing with multi-dimensional data sets? First, let's imagine we train the model and then measure its error over training time. तो एक गुड मॉडल है, सही है. देन अगर आप, ये एक बैड मॉडल है, सही. uh, उसके बाद when thinking about overfitting and underfitting, we want to keep in mind the relationship of model performance on the training set versus the test validation set. Let's imagine we split our data into training set and the test set. We first see performance on the training set, next we check the performance on the test set. Ideally, the model should perform well on both with similar behavior. But what happens if we overfit on training data? That means we would perform poorly on new test data. This is a good indication of the training set too much on the training data. We should look for a point to cut off the training time. Okay? We'll check on this idea again and we actually begin creating models. For now, just be aware of the possibility evaluating performance classification. We just learned that after our machine learning process is completed, we will use performance metrics to evaluate how our model did. Let's discuss the classification metrics in more detail. The key classification metrics we need to understand: accuracy, recall, precision, reference. But first, we should understand the reasoning behind these metrics and how they actually work in real world. उसके बाद इसमें आ जाता है आपके पास fortunately incorrect versus correct. Explain to the situations where you have multiple classes for the purpose to explain the matrix. Let's imagine a binary classification situation where we only have two available classes. जहाँ हमारे पास सिर्फ दो classes हैं, जिसमें आपके पास एक x data है, एक y data है. एक train model आपके पास आ जाता है, then एक x test है, आप image train की, आप model की हम evaluation check करें. ठीक है, तो जैसे कि इसने image को test किया, जैसे इसने आप हमने ऐसे नहीं बताया dog है, इसने हम बता दिया dog है. ठीक है, क्योंकि जो प्रेडिक्शन ऑन टेस्ट इमेज थी वो हमारे पास डॉग आ गया. सो डॉग इक्वल्स डॉग, हमने बोला था कि हमें डॉग देखना, तो आपके पास काफी सारी इमेजेस है, उसमें से जो डॉग की इमेजेस होंगी वो हमें पिक्चर का दिखा देगा. ठीक है, अगर ये कैट बोलता है तो उसका मतलब आपके पैरामीटर में कोई मसला है, तो आपको कुछ एडजस्ट करना पड़ता है. We repeat this process all the images in our X test data, and at the end we will have the count of correct matches and the count of incorrect matches. The key realization we need to make is that in the real world, not all incorrect or correct matches hold equal value. Also, in the real world, a single metric won't tell the complete story. To understand all of this, let's bring back the four metrics we mentioned and see how they are calculated. Accuracy. In the classification problem, it's the number of correct predictions made by the model divided by the total number of predictions. For example, if the X test was 100 images and a model correctly predicted 50 images, then we have
80 by 100 means 0.8 or 80% accuracy of the model. Accuracy is useful when target classes are well balanced. In our example, we would have roughly the same amount of the cat images as we have dog images. Accuracy is not a good choice with unbalanced classes. Imagine we had 99 images of dog and 1 images of cat. If our model was simply a line that always predicted dog, we would get 99% accuracy. अगर आपके पास 99 images डॉग की हैं, डॉग्स की और एक इमेज कैट की है, उसने बोला कि सारे डॉग्स हैं, तो ये एक्यूरेसी हो गई मॉडल की 99%, क्योंकि 100% नहीं हो पाई, क्योंकि उसने जो कैट था उसको भी डॉग ही बोला। तो इस पर रिकॉल एंड प्रिसीजन आ जाती है हमारे पास। एंड F1 स्कोर क्या होता है इन केसेस we want to find an optimal blend of precision and recall. We can combine the two metrics using what is called the F1 score. So ये इसका एक फॉर्मूला F1 equals to 2 into precision into recall divided by precision plus recall. ठीक है, तो इस तरह से सारा काम होता है। और एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ये आपके पास, साथ ही एक और कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जिसमें कुछ फॉर्मूलाज आपके पास है। The main point to remember that they are the main point to remember that they are the confusion matrix and various calculated metrics that they are fundamentally used of comparing the predicted value versus the true value. What constitutes good metrics will really depend on the specific situation. They're still confused on the confusion metrics, no problem. और confusion metrics आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं मैंने बताया नहीं उसका। तो अगर हम देखें दोबारा से कि what is good enough accuracy, this depends upon the context of the situation. ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि एक्यूरेसी कैसी होनी चाहिए। एक मॉडल आपने बनाया, उसको प्रेडिक्ट किया, जैसे कि कोई डिजीज का मॉडल है, जैसे कि हार्ट अटैक आइडेंटिफाई कर देता है, तो उसके साथ भी सब चीज़ें होती है। Often models are used as quick diagnostic tests to have before having a more invasive test, example getting urine test before getting a biopsy. ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है often we have a procedure to recall. Okay, देन मॉडल की इवैल्यूएशन आपके पास एक वैक्यूम के ऊपर या वैक्यूम की तरह काम करता है, जैसे कि मेडिकल डॉक्टर्स में आपका जैसे कि आपके स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर्स आते हैं, तो वो भी बिल्कुल इसी तरह चलते हैं कि उनको पता होता है कहाँ डस्ट है, वो वहीं जाते हैं, और अगर कोई बंदा सामने आता है तो वहाँ से हट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके पास इसी के थ्रू आती हैं। अगर हम आगे चलें तो ये और भी कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास आ रही हैं। अब आती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग में। वी हैव कंसीडर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग वेयर द लेबल वाज नोन ड्यू टू हिस्टोरिकल लेवल डेटा, जहाँ पे हमें लेवल पता था, बट व्हाट हैपेंस वी डोंट हैव हिस्टोरिकल लेवल्स, जहाँ पे आपके पास पूरी हिस्ट्री अवेलेबल थी। आप क्या करें जब हिस्ट्री अवेलेबल ही नहीं है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में? तो इसमें आपके पास देयर आर सर्टेन टास्क दैट फॉल अंडर सुपरवाइज्ड लर्निंग: क्लस्टरिंग, अनोमली डिटेक्शन, डायमेंशनल रिडक्शन। क्लस्टरिंग क्या होती है? ग्रुपिंग टुगेदर अनेबल्ड डेटा पॉइंट्स इनटू कैटेगरीज क्लस्टर एंड डेटा पॉइंट्स आर असाइंड टू अ क्लस्टर बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। और उसके बाद नॉर्मली डिटेक्शन में आपके पास होता है अटेम्प्ट्स टू डिटेक्ट outliers on data set, for example fraudulent transactions on a credit cards। जो फ्रॉड ट्रांजेक्शन में आ जाता है कि पैसे हैं लेकिन पैसे नहीं आते, कभी ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता पैसे कट जाते हैं आपके अकाउंट से, सारी चीज़ें इसी जहाँ पे आपके पास कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है। आंसर ऐसा प्रोसेस होता है, बेसिकली सीधा सा प्रोसेस है: एक्विजिशन, ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडल डिप्लॉयमेंट। देन लेटर ऑन द कोर्स वी एक्सप्लोर द अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोसेसेस। मजीद अगर आपको सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इसी तो आपको आप सब इन्वॉल्व करें इस कोर्स में, ताकि हम इसको प्रैक्टिकली भी और उस पर काम कर सकें, और न्यूरल नेटवर्क्स को, केआस केरस को, उसके अलावा टेंसर फ्लो को, इन सबको हम डीप डाइव करके एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। ओके, सो प्लीज एंड कर दें वर्कशॉप। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for taking out time for this workshop. Thank you, participants, for joining us. You can contact on these numbers to get more information on this course, since the registrations are open till next week. Thank you very much.